Hello, good evening, students. Hello, good evening. Give me the clearance, please. Good evening, Pawan. Pawan Kumar, good evening. Rakesh. Is everything clear? Audibility and visibility clearance. Prithvi Navodayan. Okay, very good. So, very good evening to all of you. Welcome to Unacademy platform. Dr. Khalil Khan here, welcoming you to the operating system course. And today हम start करने वाले हैं the chapter on process concepts. लेकिन प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करने से पहले जो एक फंडामेंटल चैप्टर है प्रोसेस मैनेजमेंट का, वो स्टार्ट करने से पहले वी विल हैव ए क्विक रिव्यू विथ रिगार्ड टू सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन जो हमने पिछले क्लास में देखा था। तो पिछले क्लास से हम थोड़ा कंटिन्यूटी करेंगे। सिस्टम कॉल इज ए मैकेनिज्म, इज ए अप्रोच। सिस्टम कॉल एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है through which you can access operating system services. देखिए, operating system is a service provider and we are service users. तो जब भी हमें मतलब यूजर एप्लीकेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस चाहिए होगी या हमें चाहिए, देन वी हैव टू गो थ्रू दैट सिस्टम कॉल इंटरफेस। तो डायग्रामेटिकली अगर आप समझने की कोशिश करो तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। लेट मी ऐड इट हियर। सो हियर लेट मी स्लाइटली चेंज द बैकग्राउंड। ओके, एंड पेन का साइज भी चेंज करेंगे। चलिए, सो सिस्टम कॉल और डिस्कशन, ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन सिस्टम कॉल्स। ठीक है। कहना यह है कि फॉर एग्जाम्पल this is a scenario. This is a mode of execution. Yeah, thank you so much, boys and girls, for the kind and warm wishes of Eid that is expected to be celebrated tomorrow. कल है ईद, तो थैंक यू सो मच फॉर एडवांस ग्रीटिंग्स। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दिस इज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ ऑब्जर्व, दिस इज अ यूजर मोड एंड दिस इज अ कर्नल मोड। यहां पर यू हैव सम एप्लीकेशन, you call this as a C program, and this is the system call interface या आप बोलो API, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। ये है आपका कर्नल मोड। यहां पर आपके सिस्टम कॉल रूटीन्स रहेंगे, सिस्टम कॉल रूटीन 1, सिस्टम कॉल रूटीन 2, सिस्टम कॉल रूटीन 3 एंड सो ऑन। तो every multi-programmed operating system would provide an environment, right, which is called system call interface or API, by way of which आप
ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज अवेल कर सकते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम, नो एवरीथिंग इज फाइन। श्रीजीत सिन्हा, एवरीथिंग इज फाइन। चेक एट योर एंड, आई एम नॉट म्यूटेड। मेरी आवाज यहां पर आ रही है सिस्टम पे, मैं देख रहा हूं ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी क्लियरेंस है। चेक एट योर एंड कि कहां पर आपके पास सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। देखिएगा, दिस सिस्टम कॉल इंटरफेस और एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, it is by means of this interface that you have to basically access the operating system routine और operating system application। तो देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लेके आया हूं, एक बार ग्लांस थ्रू। Programming system calls is a programming interface to the services provided by the operating system. These system calls are written in high level language like either C or C++, and it is mostly accessed by programs via high level API rather than direct low level machine language system call instructions। Three most API जो common popular APIs है वो है Win32 API for Windows, POSIX API for Linux and Unix operating systems, and Java API for the Java virtual machine। तीन API मैंने इस लिस्ट आउट किए यहाँ पर that allows the user programs to access operating system। Win32 API जो Windows प्लेटफॉर्म पे है, और POSIX API है जो Unix और Linux प्लेटफॉर्म पे है, और Java API है फॉर Java वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट। थ्रू Java प्रोग्राम्स आप एक्सेस कर सकते हो। एंड वाई यूज, तो देखिएगा आप यहाँ पर वाई यूज एपीआई रादर देन सिस्टम कॉल्स, वो हम डिटेल में देखेंगे। नोट दैट द सिस्टम कॉल नेम्स यूज थ्रू आउट, ठीक है, जेनरिक सिस्टम कॉल्स नेम्स है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिगार्ड टू सिस्टम कॉल इंप्लीमेंटेशन, इट इज दैट every system call is associated with a unique number called system call number या system call ID। जैसा हर स्टूडेंट का एक स्टूडेंट आईडी होगा, हर फाइल की एक फाइल आइडेंटिफायर होगी, हर प्रोसेस की प्रोसेस आईडी होगी, उसी तरह हर सिस्टम कॉल की एक सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, सिस्टम कॉल नंबर होगा। सो ए नंबर इज एसोसिएटेड विथ ईच सिस्टम कॉल एंड द सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन्स ए टेबल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटेन्स ए टेबल। maintains a table, look at this, system call interface maintains a table जिसका नाम है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, dispatch table, if you remember, dispatch table। It is this indexed according to these numbers। So this dispatch table is indexed with regard to the system call numbers, right? So हर system call का आपका index होगा with the system call number into this dispatch table maintained at the system call interface। So then the system call interface invokes the intended system call in operating system kernel, and then it will return the status of the system call। Status of the system call क्या है, whether the system call was successful or unsuccessful, या फिर system call कोई argument, कोई parameters return करना है, कोई value return करना है, then it will return the value or return the result, return the values। The caller मतलब user program, C, C++ या Java program need not worry about the implementation of system call, how the system call is implemented, and then what are the data structures that are used in the implementation, what is the design method used in the implementation. User programs, we don't have to really bother about those implementations। So most of the details of operating system interface hidden from programming API managed by the runtime। जैसा अगर Java का है तो Java runtime environment JRM that will manage the system call implementation। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, देखिएगा जो मैंने अभी बताया आपको। You have the user application, this is a system call interface, this is a dispatch table। So boys and girls, this is a dispatch table। So predominantly this dispatch table will contain the index I of the system call which you are making। जैसा कि हम यहाँ पर system call कर रहे हैं open is a system call for opening a file। Then the index I is associated with this open, that will give me the address of the system call in the kernel, right? The main objective of this dispatch table is to get the address of the system call from dispatch table। ये देखिए, ये मेरा एड्रेस है, starting address X, तो यहाँ पर X स्टोर होगा। Then I start, this is the implementation of open, तो यहाँ पर instructions code होगा। The entire code of this system call is executed atomically, it follow atomic execution। Atomic execution का मतलब क्या है, non preemptive execution। And then the last instruction will be a return instruction where we are going to return back the control from kernel mode to user mode, we are returning। So that is a normal system call implementation, normal system call implementation। So this is the approach। Now another important point, so this is a
एक रियलिस्टिक एग्जांपल से दिया गया है, मेन फंक्शन है, देखिएगा दिस इज सी प्रोग्राम, मेन फंक्शन है printf. Now printf, listen to me, printf is a library function. Printf is a library function. Now this library function in turn will call, in turn implementation इसके अंदर से और इसके inside we will have a system call by name write. Printf is going to write, so therefore write system call. So again it will go to the standard C library. यहाँ देखिएगा लिखा गया है, देखिए write system call. A standard C library, not an interface. And then basically the write invocation is made, and then write system call is executed, and then we return back to the kernel mode. So this is the implementation of system call in the language C. Now the most important aspect that we need to discuss as part of system call, मैं generally students को ये कहता हूँ कि perhaps in future 2025, 2026 gate में you can expect some questions based on parameter passing in system calls. सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा C++ languages में कि function parameters, how are function parameters or how are parameters passed to the functions in the language C++. What are the various parameter passing mechanisms that you have studied? Come on, pen down in the chat box, write down in the chat box and let me know what are the various parameter passing techniques, that you have studied in the languages C++. बोलिएगा. What are the various parameter passing techniques that you studied in the programming languages like C++? Come on, you might be knowing it. What are the various parameter passing techniques? Come on. Yes, Rakesh Joshi is right. Call by value, call by reference. Call by value and call by, let me write down here. Parameter passing methods which you studied, for example, in the languages like C++. There are two ways of passing the parameters. One is call by value and the other is call by reference. I would like to tell you that these two approaches of parameter passing is implemented or used for two types of functions. One is user defined functions and the other is predefined functions. User defined function जो आप define कर रहे हो program में, predefined function जो compiler library के functions है, right? So those functions, for these two functions, the characteristic of these two functions is that they are implemented in user space. They are executed and implemented in user space. User space का मतलब क्या है? User mode. So remember, very important point, एक technical point आपको बता रहा हूँ. When I am implementing parameter passing mechanism in C++, call by value, call by reference, basically these two are the mechanisms used for two types of functions, user defined and predefined or compiler defined library functions. अब जब आपकी बात होगी third type of functions. The third type, what is the third type of function? हमने कहा third type of function is system call. Now for system call, where is system call implemented? We already said system call is implemented in kernel mode. So whenever I make a system call from user mode to kernel mode, user mode से kernel mode पे जाएगा control. So at that time I cannot use call by value, call by reference क्योंकि memory space totally अलग है, right? So that is our user space. This is system area, user area, system area. So you cannot remember this point. You cannot use call by value, call by reference for passing parameters when I make a system call from user space. When I make a system call from user space, I cannot use call by value and call by reference. Then question is, what are the approaches that are used for passing parameters whenever we make any function call from user defined function? Like in this diagram, if you observe, when I'm making a call like open, if I need to pass parameters, so it has to go from user mode to kernel mode. Then how are the parameters passed when I'm making a call from user mode to kernel mode?
that I would like to basically make you understand here. Read this. Read this. There are three approaches. There are three approaches. Often more information is required than simply identity of desired system call, exact type and ठीक है ये चल यहाँ पे. There are three general methods. I am highlighting here. There are three general approaches used to pass parameters to the operating system. That means when I am making a system call, to operating system, there are three ways of passing the parameters. Gate exam perspective से ये important topic है. You can expect some MSQ question or MCQ reasoning question or a direct question based on this. क्या है भैया the three approaches? What are the three approaches? Approach number one. Approach one. Pass the parameters in registers. जो प्रोसेसर के रजिस्टर्स है उसमें जो आर्ग्यूमेंट के वैल्यूज है आप पास कर दीजिएगा. You pass the values in the registers. Our operating system will have access to the registers and therefore the operating system can fetch the parameter values from the registers. ये फर्स्ट अप्रोच है. लेकिन इसका ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर लिमिटेड इन नंबर. आपके जो रजिस्टर्स होंगे प्रोसेसर में लिमिटेड है. 10 रजिस्टर्स, 12 रजिस्टर्स, 15 रजिस्टर्स. सपोज इफ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो जब हमें प्रॉब्लम होगा. If the number of parameters are more than the number of registers, then we'll have a problem. So therefore, the register method should be used. The register method of parameter passing should be used only when the number of parameters are less. तभी आप यूज करोगे. यही पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा. In some cases, maybe more parameters than registers. These are drawback. जो केसेस में आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा हो than the number of registers, then this method fails. जब ये फेल होगा, then I have to go for second approach. Second approach. What is the second approach? In the second method, we are going to put the values of the parameters in a block or table in memory. ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी एरिया में हम एक टेबल बनाएंगे या ब्लॉक रखेंगे, वहां पर पैरामीटर्स पास करके वैल्यू स्टोर कर देंगे. एंड द एड्रेस ऑफ दैट टेबल, एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक विल बी केप्ट इन अ रजिस्टर टू बी यूज्ड बाय द सिस्टम कॉल रूटीन टू एक्सेस द वैल्यूज. दिस कॉल्ड ब्लॉक मेथड और टेबल मेथड. दिस इज कॉल्ड the block method or the table method. Look at this. Parameters stored in a block or a table in memory, and address of the block is passed as a parameter in the register. This approach taken by Linux and Solaris operating system. Solaris or Linux operating system block method use करेगा for passing parameters. Block method always. बच्चों इंटरव्यू क्वेश्चन भी है. गेट एग्जाम में आपको पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंटरव्यूज में पूछा जाएगा. System call is a very important topic as far as implementation, as far as interviews are concerned. आपको पूछा जा सकता है what is a system call. Second question, अगर आपने आंसर कर दिया what is system call, they will ask you how is system call implemented. आप बताओगे how it is implemented as we discussed. फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि how are parameters passed to system calls. तब आप बोलोगे these are the methods. Then उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है are you a user of Linux, are you a user of Solaris. Then if so, how are parameters passed in system calls in the case of Solaris and in the case of the Linux operating system? They are passed by means of block method or table method. So that is the method. Third approach. So first approach was registers. Second approach was the block or table method. Third method is altogether a different one, that is called stack method. Stack method. Look at this. Parameters placed or pushed onto the stack by the program. आप देखिए हमने ऑलरेडी एज पार्ट ऑफ प्रोसेस जब डिफाइन किए थे कि एवरी प्रोसेस एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर राइट विल हैव इट्स व्हाट इज कॉल्ड स्टैक, रन टाइम स्टैक. आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो कॉन्सेप्ट रन टाइम स्टैक. अपार्ट फ्रॉम, लिसन टू मी बॉयज एंड गर्ल्स, अपार्ट फ्रॉम रन टाइम स्टैक associated with the process in the user space, a process will also be associated with a kernel stack. A process will also be associated with the kernel stack as part of storing, as part of basically system call implementation. System call के implementation के लिए एक kernel stack भी होगी. Kernel stack में क्या करेंगे आप, ये जो arguments और जो parameters है वो pass करके store करेंगे. So parameters are pushed onto the kernel stack. So there are two types of stack, user stack and kernel stack associated with every process. For user defined functions I use user stack, for operating system routines I use kernel stack. तो यहाँ पर वही कहा गया है, parameters placed are pushed onto the stack by the program and popped off the stack by the operating system.
तो प्रोग्राम पुश करेगा पैरामीटर्स ऑन स्टैक, ऑपरेटिंग सिस्टम विल पॉप द वैल्यूज फ्रॉम द स्टैक. So block and stack method do not limit the number of length of parameters being used. So general method is block method and stack method. So boys and girls, these are the three implementation methods for passing parameters. Number one, registers. Number two, block method or table method. Number three, stack method. So these are the three approaches. यहाँ एक diagram से भी बताया गया, देखिए how block method parameters are passed via table. So in the operating system, basically like heck, these are the parameters for the call, these are the instructions. So here I make a system call. In this table, this is a code. So the table which is placed maybe somewhere here with an address X, where I have all the parameters. That address is passed into the register, and the code for the system call number 13, this is the code for system. So it will read the values from the table X. It will read the values from table X. So this is the approach for that. Rakesh is asking register block method and stack method. Okay. Kernel stack एक ही होगा? No. User stack and kernel stack are different. User stack is part of the process structure in main memory in the user address space. And corresponding to the process, operating system will maintain a kernel stack for each process. The purpose of the kernel stack is to store the arguments needed for making the function, making the system call. ठीक है? So that is the difference. They are not the same. अब नेक्स्ट है, आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है. मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आज भी, तो आपके पास ये एक नोट्स रहेंगे. एट योर टाइम ऑफ लीजर आप देखिएगा व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ सिस्टम कॉल्स. इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ सिस्टम कॉल्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन. So they are categorized into different types, like as you see on the board. First is related to files, for file management, like opening a file, creating a file, reading from a file, writing to a file. For all these operations we have system calls. For all these operations we have system calls. Get and set file attributes. File के जो attributes होंगे, आपने read करना है या write करना है या update करना है, you can do that with corresponding get and set file attributes of the file. Then we have device management, for IO management related system calls, like requesting the device, releasing the device, read in, write and reposition, get device attributes, set device attributes, attachment and detachment of the devices. All these are the list. You don't have to by heart, just take glance through करना है आपको. More important is process control, ending the process or aborting, loading and executing the process, creating the process. इसके लिए system call का नाम है, आपने पता होगा, fork. Fork is a system call used for creating a child process. Then terminating the process, ending, terminating are same. Get process attributes. Process के जो attributes होंगे, कहाँ store होंगे process के attributes, आपने पता होगा, आपने सुना होगा, वरना आज हम पढ़ेंगे. That is called PCB, process control block. So you have system calls for accessing, for example, process attributes, setting the process attributes, waiting for some time, waiting for some event, allocating and deallocating memory, and all these are related system calls related to the process management. Then you have system calls related to information maintenance, like getting the time, setting the time, right, updating the time, date and all that. Here communications, creating and deleting the communication link, setting and getting the messages from the message queues and other aspects from client server environment, shared memory model. These are all IPC mechanisms जो हम अब बाद में पढ़ेंगे. Then you have protection related attributes, protection related system calls, protection related. So boys and girls, I am trying to only tell you that for different modules of operating system, process manager, memory manager, file manager, device manager, सभी ये managers के लिए we have system calls for accessing the information. So from the user application, whatever you can get, basically you can get the information from all these managers by means of system call interface. So that is the concept of it. फिर ये देखिएगा यहाँ पर एक brief description है, again related to process management, जैसा fork system call. मैं fork के बारे में एक detailed case study लेने वाला हूँ at later point of time, because until we complete process concepts, unless and until we complete CPU scheduling, we cannot have a discussion of fork system call. तो मैं एक सेपरेट क्लास में, सेपरेट लेक्चर में पूरा उसका डिस्कशन सिर्फ फोर्क सिस्टम कॉल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद फोर्क पे होगा. यहां पर सिर्फ इतना हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फोर्क इज बेसिकली अ सिस्टम कॉल फॉर क्रिएटिंग अ चाइल्ड प्रोसेस. तो उसके मोडालिटीज क्या है, उसके सिमेंटिक्स क्या है, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग फोर्क, दैट ऑल वी डिस्कस, विल कवर इन दैट एक्सक्लूसिव क्लास ऑन फोर्क. लाइक वेट फॉर पेरेंट आईडी, वेट फॉर अ चाइल्ड टू टर्मिनेट, exec v,
is basically a system call used for execution of a program, loading and execution of a program. Then exit the system call. Then like that, under file management, these are all the system calls along with syntax and their description. So my request again and again, when I share this PDF, ये आप अपने notes की तरह रख लीजिएगा और हर system call की स्टडी कीजिएगा, क्योंकि PYQs अगर आपने देखे होंगे तो many a time they have asked in questions related to system calls. What does this system call do? What is the purpose of this system call? इसका implementation aspects के बारे में पूछा गया है. उसी के लिए मैंने आपके यहाँ मैप के लिए यह टेबल बनाया है. About all the system calls in detail with their description. What does this system call do? And what is the syntax of it? Complete information I have given under all the headings. Directory management के लिए है देखिएगा. और यहाँ पर एक comparison है between Unix and Windows. Unix and Windows के system calls का comparison. Like सिस्टम कॉल का नेम अलग होगा लेकिन फंक्शंस दोनों का सेम होगी, फंक्शन दोनों की सेम होगी. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू ऑब्जर्व हियर प्रोसेस कंट्रोल के in the case of Windows we use a system call by name create process, and in Unix we call it as fork. Exit process we say exit. Wait for single object, that is called wait system call. So Unix में क्या convention है और corresponding Windows में क्या convention है, एक sort of table है that shows you the correspondence between correspondence between both the types of operating system. What system calls are used in which types of operating system, and different operating system Windows and Unix, that is highlighted here. So this also you can just glance through at later point of time. ये एक प्रोग्राम भी है, प्रोग्राम मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा when I take up the topic on fork system call. तो बच्चों ये था एक brief description with regard to system call implementation, parameter passing mechanism, categories and types of system call. ठीक है ना, इतना काफी है गेट एग्जाम के लिए. And you can see the PYQs based on all these questions, based on all these topics that we have discussed. अब हम स्टार्ट करेंगे. वी आर रेडी टू लॉन्च अवर डिस्कशन विथ द न्यू चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर इन प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. दैट इज प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स. Process concepts. बच्चों, so far we were basically using the word sometime program, sometime process. Sometime we were using the word program, sometime we were using the word process. अब तक हमने यही कहा कि दोनों सेम हैं, लेकिन now onwards I would say that they are not same. They are not same. Anmol Anand, Mr. Anmol Anand repeatedly is trying to send the comment that I am from triple E batch and am I eligible for GATE CSC? Yes, GATE CSC, GATE DA के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी चलती है. ट्रिपल ई हो या EC हो या इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, आप GATE CSC का पेपर लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन यह है कि आपने सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा. या तो सेल्फ स्टडी कीजिएगा या कहीं एनरोलमेंट लीजिए, जैसा अनअकैडमी है, या और आप चाहो एनरोल कर आपको स्टडी करना होगा गेट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट. सेल्फ स्टडी इज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल फॉर अदर ब्रांच स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. दैट्स व्हाट आई वुड से. अदर ब्रांच स्टूडेंट, unless and until you are an IITian or maybe a top NIT student. ठीक है. और एक डिस्करेजिंग बात मैं देख रहा हूं बच्चों, while I am taking the class, the student count is not getting stabilized, and that is a worrisome point to continue this series. Because I expect it is reaching 25, 30 and suddenly dropping to 12, 15, 18, 20. That should not happen. So I expect a fixed number of students to be strictly following and interacting with me, so that there is an encouragement, because I am doing my level best to basically deliver. So I expect that consistency should be there. Okay. Pawan Kumar, now I'm going to explain the discussion. I'm going to take up the discussion on program versus process. That will be my first topic. ठीक है ना? So come on, boys and girls, please try to be active, participate, ask your doubts, so that I can also be in a motivation and good enthusiasm. तो चलिए, I will start my discussion with, as Pawan Kumar said, sir मुझे confusion हो रहा है, what is program versus process. तो सबसे पहले ये हम start करेंगे.
Before I formally define what is a process, सबसे पहले हम बात करेंगे what is a program. देखिए, जब the word when I say program here in the subject of operating system, जब भी हम word use करेंगे program, we are invariably referring to executable program .exe. We are invariably referring to executable program, not a high level language program. जो program high level language से translate हो चुका हो through a compiler into a machine language executable program. The machine language executable program or a high level language program, you can say, always consists of two things. It always consists of two things. Number one, instructions. And number two, data. कोई भी प्रोग्राम हो, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हो या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हो, ऑलवेज इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा. अगर आप इसका कोरिलेशन लेके समझाने के लिए कहो, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस. सी ऑन बोर्ड. Suppose if I write a simple C program like this, I have three variables. I write a statement A is equal to 1, B is equal to 2, and I write C is equal to A plus B. C is equal to A plus B. Look at this. This is my high level language program. इसका equivalent machine language program क्या होगा? This is .C program. इसका equivalent .exe program क्या होगा? In the memory, I will have three variables. A, B, C are three variables. Something like this you can imagine. This variable A, this variable B, this variable C in the memory. Then I will have instructions like load into a instruction. What are the instructions? Load into variable A, constant 1. Load into variable B, constant 2. Then for this statement C, I will have instructions like load into register R1, the value of A. Like that, load into register R2, the value of B. Then I will have instruction like add the values of R1 and R2. And then I say store into variable C, result from R1. So boys and girls, I am trying to say that these are instructions and this is my data. जैसा ये instructions है, ये data है. High level, low level. So whenever I said program here, I am primarily referring to .exe program which has instructions and data. The data that जो variables जो आप use करोगे ना to store the values, to store the data, that is called data basically. जो variables use करोगे, data structure use करोगे आप, where I am going to store the information, that is called data. The data that we use in the program is of two types. Come on, tell me in the chat box, boys and girls. Tell me in the chat box, boys and girls, the data that we use in the program is of two types. बोलिएगा, what are the two types of data? Data that we use in the program is of two types. What are the two types of data? Anybody? What are the two types of data? Anybody? Data is of two types that we use in our program. What are the two types of data? Yes, Rakesh is saying static and dynamic, and that is perfectly correct. Static data and dynamic data. Point number one which I want to emphasize here is the word static does not mean the keyword static that is used for storage classes in C. No. C++ में जो storage classes है, static, auto, extern, intern, the word static is not referring to this. Static का मतलब यहाँ पर ये है, static का concept या static data का concept यहाँ पर ये है कि this follow type of memory allocation. That classifies static. Dynamic data is the set of all variables and data structures जो program में use करोगे आप that follow dynamic type of allocation at runtime. So dynamic data का type of allocation होगा runtime पर होगा, at runtime. जैसा कि for example in the language like C,
when you allocate memory through malloc, या C++ में new operator use करोगे आप, like memory which is allocated, that is dynamic memory. Then the memory which is allocated before runtime, I'm writing like this, before runtime, not during compile time, not during editing time. Before runtime का मतलब है generally load time. The memory which is allocated at the time of loading the program or loading the module, that is called static allocation. So two types of data are used in the program. One is static data, the other is dynamic data. Followed my point? This category ABC comes under static type of allocation. इसके बजाय, suppose for example, if I have a variable like this, int star ptr, and if I write ptr is equal to int star malloc size of int. When I do like this, so here you need to understand, boys and girls, point number one, ptr is a variable which is occupying 2 bytes of memory, and then through malloc you are allocating integer size of integer, again 2 bytes. So these 2 bytes of memory which is getting allocated, this one which is getting allocated through malloc, this is your dynamic data. And this is allocated from a portion of memory जिसका नाम है, generally आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसका नाम है heap. So these 2 bytes of memory, for example, assuming integer is 2 bytes, these also 2 bytes, which is allocated, these allocated during runtime. So this is the class static allocation. 2 bytes is fixed and known and done not during runtime, before runtime. This is dynamic. So PTR will be pointing to this location. So the memory associated with the pointer is static. Memory which is being pointed by PTR, integer, that is basically dynamic. So हर program के जो variables है, जो data structures है, जो use करोगे आप, which needs memory allocation, that can be categorized as either static data or dynamic data. ये है program का definition. Executable program का definition ये है, it consists of instructions and the data on which the instructions operate, on which the program instructions execute. That is called static data and dynamic data. ठीक है. अब next बात होगी, what is a process? Come on, boys and girls, please tell me. What is a process? What is the standard definition of process, boys and girls? What is the standard definition of process? Anybody? Process का standard definition क्या है? Before I write down, before I explain to you, what is your interpretation, what is your understanding of process? Come on. What is the standard definition of process? Anybody? No? Yes. Program in main memory, Rakesh Joshi is saying program in main memory, ठीक है, but what is the standard definition that you see? आप textbooks में जो देखोगे definition, उसका standard definition क्या है process का? So in the new page we will try to write, एक नए पेज में हम लिखने की कोशिश करेंगे definition, formal definitions of process. Formal definition of process. जो various definitions है literature में मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा. जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है वो है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट, इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम. प्रोसेस इज सेट टू बी एक्टिव एंटिटी. Process is said to be schedulable or dispatchable unit. Dispatchable unit. Unit of CPU utilization.
utilization, unit of CPU utilization. As a matter of fact, just for information purpose मैं यहां पे लिख रहा हूं, process resides in memory. Process resides in memory. Whereas program resides on disk. Program resides on disk. These are the important perceptions of process, important definitions of process. Please try to have a look closely on all these definitions. एक एक करके सारे के सारे definitions understand करने की कोशिश करेंगे. Please say. Program in execution. Program में भी हमने देखा what is a program. .exe program having instructions and data. So program is there on disk. जब जो भी program को आपने execute करना हो, whatever program you want to execute, first you have to bring it into main memory. That process of bringing the program into main memory is called process creation. जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ जाएगा, प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में आ जाएगा, अब हम उसे प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे प्रोसेस. इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स एंटिटी फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोसेस. जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं. टेक माई सेल्फ, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए टीचर बाई प्रोफेशन. प्लीज फॉलो मी. आई एम ए टीचर प्रोफेसर बाई प्रोफेशन. ठीक है ना. मेरा एक अपना कॉलेज है जहां पर मैं वर्क करता हूं, फॉर एग्जाम्पल. और यू टेक दिस क्लास. Right now I'm taking class in Unacademy platform. So I'm an educator at Unacademy platform. Now I'm also a family member. मेरी भी अपनी family है. I'm a family member. I'm part of them. Right? So as long as I'm there at my residence, at my home, जब मैं घर में होऊंगा, when I'm there at my home, I'm a family member. मेरा कोई ताल्लुक नहीं है educator or a professor of computer science. I cannot keep on telling my family members saying that all of you please sit down, I am educator, I am professor, I am going to teach you operating system, you kindly follow me. They will say what is this nonsense, get lost. आप प्रोफेसर होंगे अपनी जगह, यहाँ पर आप फैमिली मेंबर है, that's it. It is just like this. So when I come to this platform, when I wear the t-shirt and come to the platform, I am educator, I am a professor of computer science. Are you getting my point? So my state got changed. So exactly it is like that, my state got changed. So program resides on disk, and when that program gets into main memory, it becomes process. It becomes process. Just like when I'm there at my home with my family member, I'm a family member. Mr. Khalil, that's it. And now when I come here, I'm a professor. Same person, same person. State got changed. State got changed. Got it? This is the meaning of this. So program in execution state. Execution, the word execution, जब हम word execution बोलेंगे यहाँ पर, execution का मतलब है when it is utilizing resources of the system. Resources of the system. Resources क्या है? Memory है, processor है, registers है, and other resources. जैसे कि I am utilizing the resources. Smart board use कर रहा हूँ, pen use कर रहा हूँ, camera है मेरे पास, right? Lights है, and there are other equipments. These are the resources. So I utilize. जब मैं घर में होगा, मेरे अपने मकान में होगा, जब अपने होम में होगा, I will not be using any resources. I am simple sitting idle. That's it. वहां के जो resources है वो use करूंगा मैं. The internal resources ये जो है system के, I will not be using there. That is the meaning of it. So program in execution, when it is utilizing the resources of the system, it is called process. It is called process. ठीक है? Don't think that when it is running on CPU, then only it is called execution. When it is running on CPU, it is in execution. When it is performing IO operation, is in execution. When it is waiting in the memory to get a chance to run on CPU, it is in execution. So execution का मतलब ये है कि when it is utilizing the resources of the system, that is called process. Next, instance of a program. मतलब ये है कि process is created from a program, instantiated from program, और ये जो relationship है, I say that as an analogy, the relation between program and process, therefore, based on this definition, is just like the relation between dash and dash in object-oriented philosophy. बोलिएगा. When I say program, process is an instance of a program. Process is instantiated from a program. तो ये जो concept है, instance and from a program, process, ये जो concept है, this is I am saying is exactly similar to the concept of dash and dash in object-oriented philosophy. बोलिए.
This similar to which concept of object oriented philosophy? अब आपने पढ़ा होगा C++ जावा, तो कौन सा है? एग्जैक्टली करेक्ट राकेश, वेरी गुड. क्लास एंड ऑब्जेक्ट. क्लास एंड ऑब्जेक्ट. Class is like a program. Object is like a process. You can create many objects from a class. You can instantiate many objects from the class. Exactly like that, from a single program, I can create many processes. From a single program, I can create many processes using mechanisms like fork. Using mechanisms like fork. Using mechanisms like fork, we can instantiate many processes from a single program. So that is the second definition of process. Instance of a program. Process is said to be an active entity. It is alive, agile. देखिएगा, मैं जब मैं अपने सेटअप में आ गया, मेरे स्टूडियो में आ गया, मैं बेसिकली आई एम एक्टिव नाउ. द सेम थिंग जो मैं क्लास में कर रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, वो नहीं कर सकता हूं मैं while I am at my residence. So program is passive. It is not utilizing the resources. Process is active. It is alive. It is utilizing the resources of the computer. Yes. So that is active entity. It is a unit which can get scheduled onto CPU. The act of giving the control of the CPU to the process is called dispatch. The act of making a selection के कौन सा process run होना है, that is called schedule. So making a selection is called scheduling. Giving the control is called dispatching. So process is something which gets scheduled onto CPU. Process is something which can get dispatched onto CPU. So that is another definition of process. सुनिएगा, it is a unit of CPU utilization. प्रोसेस वो है जो बेसिकली सीपीयू को यूज करेगा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए. यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन. बॉयज एंड गर्ल्स, हियर आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू आस्क वन क्वेश्चन. देयर आर टू यूनिट्स ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन. वन इज प्रोसेस. व्हाट इज द अदर यूनिट विच इज आल्सो अ यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन? देयर इज अनदर एंटिटी. बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज टेल मी. देयर आर टू एंटिटीज विच कैन यूटिलाइज सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक है प्रोसेस, दूसरा क्या है? क्या चैट बॉक्स में कोई लिख के बताएगा प्लीज? व्हाट इज अदर यूनिट विच बेसिकली यूटिलाइजेस द सीपीयू? वन इज प्रोसेस. व्हाट इज अदर यूनिट? व्हाट इज अदर यूनिट दैट यूटिलाइजेस द सीपीयू? एनीबॉडी? आई एम वेरी श्योर यू नो इट. दोज हु स्टडीड ऑपरेटिंग सिस्टम को उनको पता होना चाहिए. व्हाट इज अदर यूनिट दैट यूटिलाइजेस द सीपीयू? वन इज प्रोसेस. व्हाट इज अदर यूनिट? नो, नॉट प्रोग्राम. देखिए, प्रोग्राम कभी भी सीपीयू पे रन नहीं करेगा, प्रोसेस रन करेगा. और आपको बाय दिस टाइम यू शुड हैव बेसिकली हैव द नॉलेज के व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट इज प्रोसेस. नो प्रीति मिश्रा, दैट्स रॉन्ग. बस टाइम इज द टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस टू रन ऑन सीपीयू. एनीबॉडी एल्स? राकेश, पवन, what is other unit other than process which can execute, which can utilize the CPU? One is process. What is other thing? अगर आपने पढ़ा होगा, no, Preeti Mishra, that is wrong. No, why not input output unit? You are totally getting confused. One unit which can run, देखिएगा, अगर ये आपका CPU है, ये CPU पर कौन रन करेगा? CPU पे रन करेगा या तो process. If not process, what is other unit which can run onto CPU? The other unit which can run onto CPU is called thread. It's called thread. Are you getting? Thread. Thread is the unit. Chetan Gaur, Rick, Rana, Meghna. Rana is correct. Thread. Thread के बारे में भी हमारा एक चैप्टर होगा, हमारा एक लेक्चर होगा on threads. So thread and process are the two units which can utilize CPU. Unit of CPU utilization में threads और process है. And finally I said process resides in memory, program resides on disk. Process is active, program is passive. Program is passive. And lastly I would like to tell you another very important definition of process. Please follow me carefully. Another very important definition of process. Some people say that process is an animated spirit. Process is like an animated spirit. Very perfect and very important definition. Let me see who will try to elaborate this definition. Process is said to be an animated spirit. Process का और एक नाम है animated spirit. Process is like an animated spirit. यहां पर स्पिरिट का मतलब क्या है? स्पिरिट का मतलब है आत्मा. आत्मा, सोल, SOUL, सोल, आत्मा या सोल.
So process is like an atma or spirit within program. Within program. Listen to me carefully and try to understand what I am saying. क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा. To really build up understanding what is program and what is process. देखिए, most of us believe that there is a spirit inside the body. जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर एक स्पिरिट है. मोस्ट ऑफ अस बिलीव, आत्मा या सोल. इवन दो आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बिलीव, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं मानने के लिए कि एक स्पिरिट है इनसाइड द बॉडी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Even though I'm not forcing you to believe, but most of us in the world believe that there is a spirit inside the human body. As long as the spirit is there, person is alive, active, utilize the resources of the computer system, of the environment, food, water, air, atmosphere, etc. The moment that spirit goes off, the moment जो spirit चले जाएगी body से, then it is a dead body. Then it is a dead body. Most of us believe like this. Then question is, listen to me. ये जो correlation है exactly fits for program and process. The author of this definition who say our process is to be understood like animated spirit. Process is like an animated spirit. The author is trying to say that program is like a dead body on disk. Process is like a spirit within main memory. Within main memory. When the program comes into main memory, it comes and spirit comes into it and it becomes active, alive. It perform the instructions, executions, and IO operations and other activities. So process is like an animated spirit within the program. Just like a spirit inside the human body, process is like a animated spirit within the program. Yes. And now the point is, can we see the spirit? No, we can't see the spirit. Can we see the whole human body? Yes, we can see the body. उसी तरह, you can see the program, but you can never see process in the main memory. You can never see process running on CPU. You can never see process performing IO operation. लेकिन still we believe process is there and executing it. So this is a correlation between program and process. अब यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट जो प्रेजेंट है क्लास में अभी, उनको आइडिया हो चुका होगा, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि व्हाट इज द रियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस. ये बोलिएगा, क्लियर है? नाउ इट इज ओके विथ यू. व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोग्राम एंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोसेस? व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोग्राम एंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोसेस? इज दिस डेफिनेशन ओके? आर यू क्लियर विद दिस? बोलिए. राकेश जोशी, you are saying no. No means what? Is everything clear with regard to the distinction and differentiation between program and process? Similarity and differences between program and process. What is the similarity and difference between program and process? Is it clear? Boys and girls, please let me know. और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा. Come on. No responses. So program resides on disk. Process resides in main memory. Program is passive. Process is active. Process is created from a program. अगर program ना हो तो कोई process का concept नहीं है. I can't have the concept of process without a program because process is created out of a program. जैसे कि I can't have an object without a class. अगर कोई क्लास ना हो तो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है. उसी तरह प्रोग्राम ना हो तो प्रोसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, एक्सेलेंट. तो नाउ यू विल बी एबल टू वेरी क्लियरली डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस. तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना है कि अदर नेम ऑफ प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड टास्क. रिमेंबर इट, टास्क. प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड टास्क by some operating system. जैसा विंडोज फैमिली में they don't use the word process, they use the word task. जैसा कि यूनिक्स फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग. विंडोज फैमिली में मल्टी टास्किंग बोलेंगे, मल्टी टास्किंग. यस प्रीति मिश्रा, दैट इज करेक्ट. प्रोसेस इज एक्टिव, प्रोग्राम इज पैसिव. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है ना?
So task, don't get confused. Task and process both are essentially same. It is a terminology difference in different families of operating system. Windows generally use the word task and Unix and Linux family generally use the word process. तो हम यहाँ पर process word use करेंगे. तो ये भी एक concept याद रख लीजिएगा. Some people even call task as a job, लेकिन generally we'll restrict only to process and task. ये हम restrict करेंगे. अब देखिएगा next aspect with regard to process that we need to understand process as an ADT. सुनिएगा. ADT का मतलब क्या है? Abstract data type, जो आपने C++ या Java लैंग्वेज में पढ़ा होगा, राइट? Abstract data type का कॉन्सेप्ट या डेटा स्ट्रक्चर्स में भी आपने पढ़ा होगा. तो सुनिएगा प्लीज. टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली ए प्रोसेस इन मेमोरी, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के परसेप्शन से देखना होगा. आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के परसेप्शन से देखना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोसेस. तो सुनिएगा प्लीज. ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से मतलब the creator of the operating system. Who creates operating system? The operating system developer, the operating system implementer, the operating system designer. He creates the operating system. He creates the operating system. So how do the developer, ultimately it is a developer जो process को भी define करेगा operating system में, process को भी definition देगा operating system में. So we are now trying to see how do the developer of operating system, how do the implementer of operating system visualize process as. So that is called developers view, developers or implementers view, or implementers view of process. How do the developer or implementer of operating system visualize a process as? The developer or the implementer of the operating system visualize process as, see the process as an ADT, abstract data type. तो आपने पढ़ा होगा every abstract data type when you go for implementation like stacks or queues, stack as an ADT, queue as an ADT, tree as an ADT, graph as an ADT. When you define any abstract data type or data structure will have four important common parameters. Any abstract data type or any data structure will have four common parameters. One is called definition, the other is called the representation or the structure, and the next is the operations, and the last thing is attributes. Any abstract data type, any abstract data structure will always have these four parameters in common. They will have definition, their own definition, they will have their representation or structure, and they will support well-defined operations and will also be associated with a well-defined list of attributes. जैसे कि, for example, stack. When you implement stack as an ADT, stack का अपना definition होगा, stack का अपना own representation structure होगा. That means you either represent the stack or implement the stack in the form of a array or in the form of a linked list. उसका stack का representation. Stack support operations आपको पता है, push and pop and peep and other operations. फिर उसके बाद stack के attributes होंगे like size of stack, number of elements in the stack, type of elements in the stack. ये attributes है, properties है. उसी तरह we are going to now define process as an ADT. Definition क्या होगा process का? हमने पिछले बार define किया, program in execution, instance of a program. All these are definitions. फिर most important point, that is my next topic of understanding or taking up the discussion, is this: representation or structure of process in memory. Representation or process structure in memory. देखिएगा, we cannot see process with our eyes, but we can assume how the process may look like in memory. ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, ये बेसिस पर गेट के क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आपने कहा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि भैया बताइए हाउ डू प्रोसेस लुक लाइक इन मेमोरी. मतलब आपको पेपर दिया जाएगा या बोर्ड पे आपको भेजा जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए हाउ डू प्रोसेस लुक लाइक इन मेमोरी, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम व्यू ऑफ ए प्रोसेस. दैट इज कॉल्ड process structure in memory. Very important point. How do process look like in memory? यहां पर मैंने आपको बताना है, सुनिएगा प्लीज. तो उससे पहले, जाने से पहले ये देख लीजिएगा,
Operating system executes a variety of programs that runs as process. A program in execution, process execution must progress in sequential fashion, no parallel execution. Now, the structure of the process यहाँ पर है देखिएगा. उससे पहले यहाँ पे points जो मैंने कहा वही है. Program is passive entity stored on disk. Process is active. Program become process when an executable file is loaded into main memory. This is the most important point with regard to the relation between program and process. Understand कीजिएगा. The most important relationship with regard to program and process is this. ये highlight कर रहा हूं मैं. ये lifetime आपने remember करना है. Program becomes process. Program becomes process when an executable file, that is executable file of the program is loaded into memory. जब भी कोई executable file of the program आप load करोगे memory में, वो process बन जाएगी. मतलब वो process create हो जाएगा. कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जब वो प्रोसेस क्रिएट होकर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज व्हाट वी वांट टू से, दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टडी. बोलिएगा यहां तक क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर अप टू दिस पॉइंट, बॉयज एंड गर्ल्स? बोलिएगा. Some student is asking, Preeti Mishra is asking, will you complete whole operating system in this series? Will this be enough for GATE? Please guide. देखिए प्रीति मिश्रा, this is your first class. आपने पिछले classes attend नहीं किए शायद. This is your first class and you are saying, will the whole course be covered or not? How can I cover the course when your attendance is not regular? I will get motivation if you come regularly, if the count is regular, if the count is stable. Count is very highly fluctuating. Then how is it possible that maybe I can, what will be the motivation for me to continue the lecture here? So first you become regular, you show your commitment, then I will also show my commitment. It is a both way, two way. This is not an enroll course. This is not an enroll course. Enroll course में मुझे attendance के बारे में नहीं देखना पड़ेगा, जहाँ YouTube पे attendance होना पड़ेगा. ठीक है? Then only I can complete the whole course. I will desire to complete the whole course provided you are basically regular and attending the lectures and participating, interacting with me. Then only I can do. ठीक है ना? चलिए next करें. So how do process look like in memory? Come on, let's continue. So consider multiple users executing the same program. ठीक है. This point also I told. One program can have several processes. One program can have several processes. Instantiation. Next slide. This is called the process structure in memory. बहुत ज़्यादा important diagram है ये. Very, very important diagram. Everybody will have to understand this. Process will have the following structure, will have the following components. Process structure in memory have the following components. Let me write down. Number one, code section. Number one, code section. This is also called text section. This is also called text section. यहां पर है देखिए सबसे लोएस्ट पार्ट पे टेक्स्ट, इसका और एक नेम है कोड. What will this contain? This will contain all instructions of the program. हमने कहा था this program consists of instructions. So all the instructions of the program are stored in this part of the process structure in memory. Memory के जो process का structure है यहां पर हम code और text section रखेंगे. मतलब all instructions will be stored here. All instructions will be stored here. फिर उसके बाद static data है, देखिएगा this static data. The global data, the static variables है जो आप declare करोगे programs में, all that memory will get allocated here. Static data जो static allocation follow करेगा. फिर उसके बाद heap है. Heap is that area of memory from where we allocate space dynamically at runtime. Dynamic runtime allocation through malloc or through new जो आप memory allocate करोगे ये heap portion से allocate करोगे. You allocate memory through heap portion. ठीक है? So that's why I am putting an arrow. ये देखिए fixed है. This is fixed in size. Fixed size. क्यों? That's why it is called static. Fixed size. 100 by 200 by जो भी size हो fixed. फिर उसके बाद heap. Heap is not fixed. It can grow and shrink.
it can grow and shrink. Look at that, this is heap. That's why I'm putting an arrow here. There is an empty space, it can grow and shrink. And this is your runtime user stack. This is runtime user stack. This is runtime user stack. What is the purpose of this stack? ये stack का क्या purpose है? ये stack का purpose है to store activation records of function calls. Activation record of function calls. To store activation records of function calls. जब भी कोई आप फंक्शन कॉल करोगे, whenever you are making a function call, user defined function हो या library defined function हो, we will create an activation record and push it onto the stack. आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के रिकर्शन सब्जेक्ट में, रिकर्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, हाउ यू आर बेसिकली पुशिंग द एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स ऑन द स्टैक. रिकर्शन आपने पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा होगा, दैट इज द सेम स्टैक. Then today I told, हाँ लोकल वेरिएबल्स होंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे, एंड देन रिटर्न एड्रेस भी होगा, वेयर आई एम सपोज टू रिटर्न बैक आफ्टर द फंक्शन कॉल इज ओवर, वहां पर होगा. ठीक है ना? तो दिस इज एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स, बट दिस इज रन टाइम यूजर स्टैक. लेकिन मैंने आज ही कहा व्हेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम कॉल कि हर प्रोसेस के साथ एक कर्नल स्टैक भी होगी. वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, वो कर्नल स्पेस में होगा. दिस यूजर स्पेस, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इज इन यूजर मोड, यूजर स्पेस, यूजर मोड. ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इन यूजर स्पेस है. द कर्नल स्टैक विल बी देयर एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस इन द कर्नल स्पेस. कर्नल स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करेगा वो कर्नल स्टैक को. दैट विल कंटेन द parameters which you are passing when you make a system call, when you call a system call or make a system call. तो ये है बच्चों प्रोसेस स्ट्रक्चर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है? कोड सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप सेक्शन, रन टाइम स्टैक और सिंपली स्टैक, यूजर स्टैक. कोड कंटेन इंस्ट्रक्शंस, टेक्स्ट कंटेन इंस्ट्रक्शंस. डेटा इज ग्लोबल डेटा, स्टैटिक वेरिएबल डेटा जिसकी साइज फिक्स्ड होगी, जो रन टाइम एलोकेशन नहीं होगा बट बिफोर रन टाइम एलोकेशन होगा. Heap is that area of memory of the process structure from where we allocate space to all such variables and data structures that follow dynamic type of allocation, run time allocation. उसकी साइज वेरिएबल हो सकती है, उसकी साइज फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डायनामिक डेटा इज एलोकेटेड मेमोरी एट रन टाइम. रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन होगी. और ये स्टैक इज मेंट फॉर स्टोरिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स ऑफ द फंक्शन कॉल्स. अब एक रियलिस्टिक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा पोर्शन ऑफ मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, कौन सा पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम गेट्स एलोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी. नेक्स्ट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज हैव अ लुक. 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि एवरीबडी प्लीज मेक ए स्टडी ऑफ दिस डायग्राम और कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम. ये एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, उसका करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस बताया गया है कि कौन से स्ट्रक्चर, कौन से पार्ट में मेमोरी एलोकेट होगी. कम ऑन, लुक एट दिस. Very important diagram. Very important diagram. Memory layout of a C program. This is a C program. उसका memory layout in terms of process structure बताया गया है. तो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. Are you able to understand, boys and girls? Are you able to understand? डेटा टाइप नहीं, डेटा टाइप कहां है यहां पे? डेटा टाइप इज टाइप ऑफ डेटा. वेरिएबल्स बोलिए आप, वेरिएबल्स विल गेट स्टोर्ड इन स्टैक. Variables may get stored in static data, not data type, variables. Swaroop Sahu, you are not using the appropriate term. It is not data type, it is the variables. अब सुनिएगा बच्चों, हम शुरू से अंडरस्टैंड करेंगे. ये है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स, राइट? इंक्लूड फाइल्स है प्री प्रोसेसर, यू डोंट हैव टू. व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई? सुनिएगा, एक्स एंड वाई आर ग्लोबल वेरिएबल्स. ये सी लैंग्वेज का थोड़ा करस्पॉन्डेंस मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सी प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से की होगी.
X and Y are global variables. X is not initialized, Y is initialized. X is not initialized, Y is initialized. ठीक है ना? सुनिएगा. Where do X and Y? Imagine normal integer take 2 bytes. So 2 bytes आपने allocate करना है. कहां से allocate होगे? That will get allocated in this data part. सुनिएगा. ये जो डेटा पार्ट है ना, यहां पर स्टोर हो गए एक्स एंड वाई, वही बताया गया यहां पर. सुनिएगा. Now the data part, now I am saying this whole thing is data part, data from the previous diagram. This data is divided into two parts, uninitialized data, initialized data. जैसा कि uninitialized वेरिएबल है, ये इनिशियलाइज वेरिएबल है, तो दो पार्ट में हम डिवाइड किए डेटा पार्ट को, uninitialized, initialized डेटा. तो ये uninitialized है, this will get space from this uninitialized data and this will get placed in this initialized data. First point. Second point. These are called, can anybody tell me in the chat box, what do you call this ARGC, ARGV? अगर आपने C programming की है और परफेक्ट तरीके से पढ़े हो, तो can anybody tell me what is ARGC, ARGV? What are these known as? Come on, Rakesh, Preeti, Sumit, Swaroop, answer me. What is ARGC, ARGV known as? What is the name in the C programming interface, C programming language? ARGC and ARGV को क्या कहते हैं हम? बोलिएगा. Come on, somebody. Nobody knows? Rakesh. If you say don't know, if you don't know, please say don't know. I will explain anyway. What is ARGC and ARGV? Essentially, primarily known as, yes, Rakesh Joshi, command line arguments. These are called command line arguments. These are called command line arguments. These are called command line arguments. जब आप प्रोग्राम को रन करोगे through command line interface, when you are trying to run the program through command line interface, right? When you are trying to run the program through command line interface, तो जब आपने अगर along with the command itself, अगर आप प्रोग्राम के arguments apply कर रहे हो, input values through arguments apply कर रहे हो, you supply it through this ARGC, ARGV interface. This is called environmental variables. Environmental variables. तो स्टैक के ऊपर एक हम स्पेस रिजर्व रखेंगे जिसका नाम होगा ARGC, ARGV पैरामीटर प्रोफाइल. ARGC का मतलब है आर्ग्यूमेंट काउंट, ARGV आर्ग्यूमेंट वेक्टर. आर्ग्यूमेंट काउंट टेल्स कितने आर्ग्यूमेंट्स है कम प्रोग्राम के साथ. आर्ग्यूमेंट वेक्टर में आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है वैल्यूज होंगे आर्ग्यूमेंट वेक्टर में. So if at all your program is accepting command line arguments, अगर आपका प्रोग्राम command line arguments accept कर रहा हो, तो जो भी command line के arguments होंगे, that will be stored here, that will be stored in this part of process structure. ये मैं कह रहा हूं. अगर command line arguments नहीं है, तो simply empty होगा, nothing will be stored here. चलिए अब next आ जाइए. Main function के अंदर we have variables called values and I. Values and I. ये है local variables. So let me write here. These are local variables. तो हमने ऑलरेडी कहा local variables comes in the class of static allocation. इसकी साइज नोन होगी, फिक्स्ड होगी. जैसा पॉइंटर 2 बाइट्स, नॉर्मल इंटीजर आल्सो 2 बाइट्स. तो ये कहां से अलोकेट करोगे आप? ये रन टाइम स्टैक से अलोकेट करोगे फ्रॉम द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ मेन. जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वी क्रिएट एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर मेन इन दिस स्टैक, और हम वो स्टैक में वैल्यूज और आई की स्पेस होगी. तो यहां पे देखिए एरो बताया है, this will be stored or this will take space from stack. Very good, very good. अब next देखिएगा, I am allocating memory. Look at this. I am allocating memory through malloc. Size of integer into 5. अगर integer की size 2 bytes है, तो मतलब 5 integers आप allocate कर रहे हो. 5 into 2, 10 bytes. And the starting address of that will be stored in values. So value is a pointer which is pointing to an array of 5 integers. Value is a pointer pointing to an array of 5 integers. तो जो malloc से memory allocate होगी ना, वो allocate होगी heap portion से. ये heap portion से देखिएगा, बता रहा है control heap. So this is a very good example. This is a very good example that shows which part of program structure gets memory from which area of process structure. From which area of process structure. ये एक extreme clarity के साथ बताया गया है. यहां पर आपके instructions होंगे, right?
ये फॉर लूप जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो इंस्ट्रक्शंस होंगे, दिस इंस्ट्रक्शंस विल बी प्लेस्ड इन टेक्स्ट सेक्शन, इंस्ट्रक्शंस, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉर लूप, जैसा लोड है, कंपैरिजन है, इंक्रीमेंट है, असाइनमेंट है, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, दैट इंस्ट्रक्शंस विल बी स्टोर्ड इन टेक्स्ट सेक्शन. फाइनली लास्ट पॉइंट, this is how the process structure look like, and this is how the correspondences between different areas of the process structure in different memory portions, text portion, data portion, heap portion, stack portion, command line arguments. अब बताइए मुझे, is everything clear? अब आप बिल्कुल एक्सट्रीम क्लैरिटी है विथ रिगार्ड टू व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोसेस मेमोरी में कैसे दिखेगा, प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या है. नाउ फॉर लाइफ टाइम यू शुड नेवर फॉरगेट बॉयज एंड गर्ल्स, ये लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट है, लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट है. लाइफ टाइम में आपने फॉरगेट नहीं करना है कि प्रोसेस क्या है एक्चुअली, प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या है, हाउ डू प्रोसेस लुक लाइक इन मेमोरी, ये सारा का सारा एक्सट्रीम क्लैरिटी होना चाहिए. ऑलराइट, तो चलिए अब हमने एज पार्ट ऑफ एडीटी हमने यहां पर हमने एडीटी डिफाइन किया था, प्रोसेस एज एन एडीटी कहां पर दिए थे, बिफोर दिस. Process as an ADT, look at this. We have completed the definition, we have completed the structure, we have completed the definition, we have completed the structure, and now operations. Process as an ADT support a well-defined list of operations. Process as an ADT support a well-defined list of operations. What are the operations? जैसा कि stack के अपने operations है, स्टैक के अपने ऑपरेशंस है, पुश एंड पॉप, उसी तरह प्रोसेस के भी अपने ऑपरेशंस है. क्या क्या ऑपरेशंस है प्रोसेस के? नंबर वन, द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म ऑन प्रोसेस, बॉयज एंड गर्ल्स, द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म ऑन प्रोसेस इज क्रिएट. यू क्रिएट द प्रोसेस. यू मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. आप क्रिएट नहीं करोगे, आप क्रिएट क्या करोगे, आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे. देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्रिएट अ प्रोसेस आउट ऑफ इट. ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्रिएट अ प्रोसेस आउट ऑफ इट. फिर उसके बाद शेड्यूल द प्रोसेस, फिर उसके बाद रन द प्रोसेस, फिर उसके बाद ब्लॉक द प्रोसेस, देन मे बी यू सस्पेंड द प्रोसेस. दीज आर ऑल द वेरियस ऑपरेशन जो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. फिर रेज्यूम द प्रोसेस. देन फाइनली जब आपका एग्जीक्यूशन हो चुका होगा, then you terminate the process, kill the process, abort the process, terminate the process. These are all the various operations which are carried out by operating system on process as an abstract data type. Then finally we say process is associated with run and dispatch, schedule and dispatch, then run. Attributes, finally we say process is always associated with a well-defined list of attributes, properties, characteristics. बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पर मैं लिखूंगा, लिख के एक्सप्लेन करेंगे हम. प्रोसेस एज एन एंटिटी इज ऑलवेज associated with well defined list of attributes. well-defined list of attributes. Attributes का मतलब characteristics, properties, characteristics या properties, characteristic या properties. अब आपने बताना है मुझे, for example, list out, tell me some of the attributes that a process is associated with during its lifetime. Tell me some of the attributes, properties, like Rakesh has said one thing, process ID. For the purpose of identification, the very first attribute the process is associated with is called process ID. हर प्रोसेस का अपना आईडी होगा, जो हम जनरली राइट इन शॉर्ट प्रोसेस आईडी, PID. Process will be created from some parent, so we can have parent process ID. Process may belong to a group, so we may have a group ID, GID, group ID. Process ID, parent process ID, group ID.
the group to which the process belongs to. Next, what are the other attributes? The other attributes, like for example, process type of process. Still I can have other attributes. Size of process in bytes, size, right? And then state of the process. During its lifetime, the process go from one state to another state. And then program counter, PC, program counter. What does program counter contain? Please write down in the chat box. What do program counter contain? Rakesh has said program counter. Program counter, what does it contain? Come on, you should be knowledgeable. बहुत important attribute है program counter. What do program counter contain? Come on, anybody? And why this process attribute program counter is needed? What does it contain? Anybody? What do program counter contain? Come on, fast. Yes, Swarup Sahu. Address of next instruction. So let me write down. Let me write down here in the chat box. Program counter contain address of next instruction. Address of next instruction to be executed in code section or text section. Code section or text section. Program counter. उसी तरह I can have still other general attributes. I can have still other general attributes. Like for example, here I am writing. Like for example, here I am writing. General register set. General register set that contain the results of the previous operation. General register set. So process ID, parent process ID, group ID, type of the process, size of the process, state of the process, program counter, general register set, and I can even have priority of the process. Priority is an important attribute. Priority designate करेगा, priority बताएगा कि what is the level of importance of the process. Process का कितना importance है, level of importance. Vivek K Vivek, good evening. You are coming too late. Then we have other attributes like list of open files. List of open files. What are the files which are in use by the process? उसी तरह list of open devices. List of open devices. We will have some accounting information. Accounting information like how much resources, how many resources the process has used. What is the burst time of the process total completed. क्या process ने IO burst time कुछ perform किया है. All accounting information will also be there. So boys and girls, these are the called general attributes of the process. As an entity in the system, process is associated with these attributes. हर process के अपने attributes होंगे and it will vary from operating system to operating system. ये जो attributes है, these will be stored in a particular table or data structure. So what is that table or data structure known as which stores the attributes of the process? Come on, tell me. Write down in the chat box and let me know what is that table. What is that table or data structure used to store the attributes of process? The attribute values, the attribute information. Let me write. Attribute information of process is stored in a table or data structure known as dash. Fill up the dash. You know it, I am very sure. What is it known as? Yes, Rakesh Joshi is correct. Process control block. Process control block. Popularly written in short as PCB. Popularly written in short as PCB. So it will look something like this. Process control block looks something like this. This is a PCB of a process. ठीक है? See you on board. It will have several entries. It will have several entries. And all the attribute information is kept in the PCB. It will have a link pointing to the next PCB for the purpose I will tell later. So here I can have PID, process ID.
here I can have group ID, and here I can have program counter, general purpose register set, then priority, and then state of the process, size of the process, type of the process, size of the process, right? List file information, device information, all those whatever I listed earlier will be stored. This is called PCB. It's called PCB. Each process will have its own PCB. हर process का अपना PCB होगा. This PCB is just like ID card of the process, boys and girls. The PCB is just like ID card of the process. या हमारे present context में अगर पूछो तो हम बोलेंगे it is like Aadhaar card of the process. It is like Aadhaar card. Just like Aadhaar card gives complete information about the individual, like that PCB gives the complete information about the person, about the process. यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजिकल इंट्रोडक्शन है, मैं आपको कहता चलूं, सुनिएगा बच्चों. There are certain things which I would like to tell here. The whole volume of information which is kept in PCB, this information which is kept in PCB is known as process context. Is known as process context. Context. Content of PCB is called process context. Content of PCB is known as process context. And some people will call PCB as process descriptor, another term. Terminologies आपको याद होना चाहिए. Some people even call PCB as process descriptor, just like you have file descriptor, process descriptor. तो point remember करने का ये है कि हर process का from the time of its creation to the time of termination, हर process का अपना PCB होगा. PCB is part of operating system kernel data structure. PCB is never accessed by user program. आप C program से PCB के contents access नहीं कर सकते, उसके लिए आपको system call के through करना होगा. Through system call you can do it. So content of PCB is called process context. Content of PCB is called process context. Another name of PCB is called process descriptor. Process context का और एक name है, that also I will tell you. Another name of process context is called process environment. Process environment. These all terminology. Process environment. Process context या process environment. So boys and girls, this is the concept. हो सकता है एक डायग्राम मेरे पास हो, यहां पे आपको बता दूं मैं. Later it comes. यहां पर है, देखिए. Process control block. Information associated with each process also called task control block. Process is also called task, हमने पहले ही कहा. So where I have process state, program counter, CPU registers, CPU scheduling information like priority, scheduling pointers, memory management information, accounting information, input output status information. This is how my process control block look like. This is the structure of PCB. This is the structure of PCB. Structure of PCB. अब ये जो स्ट्रक्चर है, या इट इज फ्रॉम दिस टर्म प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट दैट वी हैव अ टर्म यूज्ड इन शेड्यूलिंग जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. आपने सीपी शेड्यूलिंग में पढ़ा होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में द वर्ड कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट कंटेंट ऑफ पीसीबी. और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब होगी तो पीसीबी इन्वॉल्व होंगे. लोडिंग द पीसीबी एंड सेविंग द पीसीबी इज डन ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. और पीसीबी का कंटेंट को हम कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे, इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. लेटर सीपीयू शेड्यूलिंग में फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट विथ रिगार्ड टू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और विथ रिगार्ड टू प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस स्टेट. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉल्ड प्रोसेस स्टेट्स एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. लेट मी राइट डाउन हियर. So process states and state transition diagram. State transition diagram. Process states and state transition diagram. What are the different states in which the process can be in during its lifetime? And what are the transition that the process can make going from one state to another state? ये है concept of
प्रोसेस स्टेट एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब चूंकि क्लास का टाइम हो चुका है तो हम ये एज अ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर कल नहीं होगा बच्चों, बिकॉज ऑफ माय रमज़ान फेस्टिवल ईद। सो कल देयर विल नॉट बी एनी क्लास। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। कल थर्सडे है तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे, वेयर आई विल कवर अप प्रोसेस, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स, और ये कंप्लीट करने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं सीपीयू शेड्यूलिंग। बोथ द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जहां पर हम डायग्राम देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पीवाईक्यूज, और फिर वो कंप्लीट होने के बाद शेड्यूलिंग क्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूइंग डायग्राम होगा, शेड्यूलर, डिस्पैचर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का डेफिनेशन होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे विथ रिगार्ड टू व्हाट इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का एजेंडा होगा। सो टिल देन, if you have any questions or anything, any doubt, you can ask me before I close. Till that time, you continue your learning experience and try to be attentive and try to be regular to the classes. Yes, Preeti Mishra, you are right. Yes, this description which I did today, for example, as far as this topic is concerned, is more than sufficient enough from GATE exam. Is more than sufficient enough for GATE exam. Any doubt, any question you have before I close for today's session? Okay, so take care, good night, thank you so much, and enjoy your learning experiences, learning paradigms. Okay.